Hi, dear audience. How are you? This is Rana Sir. Welcome to our RANA SIR educational channel. Today, I will talk on a topic whose name is work, energy, and power. It is also called as कार्य ऊर्जा तथा शक्ति. In this topic, I will explain its theory in detail, and then I will also explain its concept, and then I will apply this concept, these concept in the numerical. So you concentrate here to understand the theory of work, energy and power, and then its application I will do in the numericals. Okay, so you concentrate here on this live video from starting to end to understand, develop, update your knowledge on this topic. Simultaneously you like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also update their knowledge on this topic, and simultaneously you subscribe this educational channel more and more. Now one additional information I am going to tell you, and you have to follow it positively. First of all, you have to take one notebook and one pen, and then you have to sit at your location positively, properly and safely to write all information or all data which are written on the blackboard, and also those informations which are spoken by me. Okay, students, so positively you write all informations on your notebook. So I'm going to start here, so you concentrate here to understand this concept, that is one is work, energy and power. It is also called in Hindi, that is कार्य ऊर्जा तथा शक्ति. This concept, this concept I will explain in details, and then I will apply this concept in numerical. So you concentrate here to understand the concept and also its application in numerical. Okay, student. Now I am going to explain other important information of this. This is the class 11 physics, and it is available in English medium and also in Hindi medium. Now I have to explain according to NCERT pattern, because here there is no repetition of same concept, that is called NCERT pattern. Now here topic name I have written here, work, energy and power. It is also called कार्य ऊर्जा तथा शक्ति. Okay, so this definition I will explain in detail, and then I will apply its concept in numerical. So you concentrate here, and then you update your knowledge, and its application I will also do in numerical. So first of all, I will explain each and every information of each and every topic in English, and then I will translate all those informations in Hindi. So students who are reading in English medium or Hindi medium, those students can understand its concept in detail. Okay, or students who are reading in UP board, those students can also understand all these informations clearly. Okay, so I am going to explain first of all what is the concept of work. In this case, I will draw a diagram, and in that diagram, I will explain its definition, and then I will also use that definition in numerical. Okay. Now here I am going to draw a straight line. Now on this straight line, there is a object. So I have written that object OB JECT. I will say this is the object number 1. So that object I have written here. Now
This is the object. Now this object is moving with a force at angle theta. So I will say that object is moving at angle theta. So that object I will draw like this. That object is moving with angle theta, or in other words, we can say that same figure I will draw here. So one object which is moving with force F, but that object is making an angle theta from horizontal x-axis. Okay, so after some time that object moved and went to a place OBJECT. That object is same moved at a place. Now the center of this object I have to say this object, and center of that object I will also say. Now this is available at point A and this is available at point B. So distance between from A to B, I have to write here AS. This is the distance here, displacement, because it is moving in a fixed direction. So now this object is moving from point A to point B. Now this object is moving. Its movement can be in three directions, either in upward direction, either in forward direction, either in downward direction, but it is moving with angle theta from the horizontal x-axis. Now I will resolve its component along x-axis, along horizontal axis, and also along vertical axis, and then I will use the concept of work. Work is also known as the multiplication of force into displacement of a body, that is called work. Yeah, work done. So that work done can be written as, now here I am going to explain about work. What is the concept of work, and this concept I have to use here. The multiplication of force. Work done is defined as, here I will say work done is defined as multiplication of a product of force, product of force and displacement, and this PLACEMENT displacement. Work done is defined as product of force and displacement, and it is denoted with the capital W, and it is denoted by capital W, and its unit will be joule, and its unit will be, yeah, its unit is joule. I can write like this, its unit is joule or Newton meter. Its unit will be joule or Newton meter. Okay, so this is the required concept of work. Work is also a thing that is defined as product of force and displacement, and it is denoted by capital W, and its unit will be joule. Yeah, its unit is joule. Yeah, in other words, we can say that Newton into meter. So one student can write joule or Newton meter. There is no any change. Okay. Now its formula I am going to write, F is equal to F into S,
I will say f into s. But if object will move in forward direction, but this object is moving, at a angle theta from the horizontal axis. It means that I will resolve the two component of this force along x axis and also along y axis. I know the force is also, this is the general formula, means w is equal to force into displacement, but this force will be along x axis, yeah, along horizontal axis. So this formula I have to consider. But if object is moving with angle theta from the horizontal x axis, in this case I have to resolve the force, this force into two direction, one along the horizontal axis and one along the vertical axis. So along horizontal axis I have to consider that force, and then displacement I have written here. Yes, is also called distance, or, distance. If it is moving in a fixed direction, that distance can be displacement. Okay, so here I am going to explain. If there is a force, here I am saying this is the x axis and this is the y axis. Student, you concentrate here to understand it, because if you will understand it, so below diagram you can easily get the information. So here I will say this is the one velocity u. So from the x axis there is angle theta. So I will resolve the component along the x axis and also along the y axis. So this angle is theta. So I will say along x axis that will be u cos theta. Similarly, I will say u cos theta, and along y axis, suppose that if a student will say this angle is how much, this will be 90 degree minus theta. This will be 90 degree minus theta. It means that I will say the x axis, the angle between x axis and y axis there is 90 degree. Okay, so this angle is theta, so this angle will be 90 minus theta. So I will say same angle I will consider here u cos theta. So here will be u cos 90 minus theta. So here I can write u cos 90 minus theta. 90 minus theta, here I will write properly, so each and every student can understand its concept in detail. So y component will be u cos 90 degree minus theta. So here I will write. Now here I will consider one information. Now in first quadrant all trigonometrical ratio will be positive. Now there are 6 trigonometrical ratios are existing in this world. Okay, so here I will say along in the first quadrant there will be all trigonometrical ratio will be positive, but in second quadrant there will be sine and cosine will be positive, but in third quadrant there will be cos theta, tan theta and cot theta will be positive, but in the fourth quadrant sec theta and cosec theta will be positive and other trigonometrical ratio will be negative in fourth quadrant. Okay, so those informations I will also explain here. After explaining I will erase it. This is first quadrant, this is second quadrant, and this is third quadrant, and this will be fourth quadrant. So its movement like this anti-clockwise direction. Okay, in first quadrant all trigonometrical ratio will be positive, but in the second quadrant only sine and cosine will be positive and other trigonometrical ratio will be negative. In third quadrant only tan theta and cot theta will be positive and other trigonometrical ratio will be negative. Similarly I can say in fourth quadrant only cos theta and sec theta will be positive and other trigonometrical ratio will be negative. Okay, now here I'm considering here 90 minus theta, it will fall in
first quadrant. So in first quadrant, all trigonometric ratio will be positive. Now one additional information I am telling you, and you concentrate here to understand it. First of all, you know 90 plus theta and 90 minus theta, it will change the trigonometric ratio as sin theta will change in cos theta, and cos theta will change into sin theta. Tan theta will change in cot theta, and cot theta will change in tan theta. Similarly, sec theta will change in cosec theta, and cosec theta will change in sec theta. So you have to know its concept. You have to know its concept in detail. Sec theta will change in cos theta, and cos theta will change in sec theta. So you have to know its concept in detail. Okay, so properly you have to follow this concept. So here cos 90 minus theta, it will change. So it after changing, I will say cos theta will change in sin theta, and sin theta will change in cos theta. Similarly, cot theta will change into uh, tan theta, and tan theta will change into cos theta. And similarly, sec theta will change in cosec theta, and cosec theta will change in sec theta. So here cos theta will change in sin theta. So here we will use sin theta, because this will be in first quadrant. In first quadrant, all trigonometrical ratio will be positive. Okay, so y component will be u sin theta, and x component will be u cos theta. Okay, this concept I will use here to resolve this force. So here there is theta, here is u, so I have written here u, and here is f, so I will write x component will be, here I will write f cos theta, f component will be f cos theta. And similarly, this concept I will use. After using, I will say its y component will be f sin theta. Okay, y component will be f sin theta. Now this object one which is moving from point A to point B, so we have to write the work done. Work done is simply multiplication of force into displacement. So multiplication of force, that is f cos theta, that is a force, and displacement is s. So multiplication of f cos theta into s, that is called work done. So in this formula I have to write there. So here in this formula theta is 0. Now in this case, if theta will be, if angle will be some degree, that is theta, so here I will write f, here I will write f cos theta into as. So in the place of f, I have to write here f cos theta into s, because here in this formula there is 0 degree, theta is 0 degrees, cos 0 degree, that will be 1. So f into s. So I have written here f into s, but here theta is, here angle is theta. Angle is theta. Here angle is 0. Here I have to write here angle is 0. Here angle is 0 degree, but here angle is theta. Okay, so when I will put the value of 0, so I will get this value, because here cos theta in the place of theta I will put 0, so cos 0, which is equal to 1 into f, that will be f. So f into s, that is called work done. When object will move horizontally, so from this point to that point, but this object is moving with angle theta. So in this case I will say if angle is preparing their theta, so I will write in the place of f cos theta, because this force I have resolved into two parts, into two components, one component along the x-axis and one component along the y-axis. So work done is the multiplication of force into displacement. In the place of force I have written here f cos theta into s. Okay, so after simplification I can arrange this formula like this, f s cos theta. Okay,
fx cos theta. So each and every student has to remember like this: work done which is equal to work done which is equal to, I have to write properly, cos theta. Here I have written fx cos theta. Okay. So work done W which is equal to fs cos theta. fs cos theta. fx cos theta, and its unit will be joule, or we can write Newton meter. Okay students, I hope that you are understanding this concept in detail. Okay, so work is very simple. Work is also known as work done, that is product of two quantity. One quantity is force and other quantity is displacement. If object will move forward, the forward means horizontally. So in this case theta will be 0. So in this formula I will put in the place of theta 0. So cos theta which is equal to 0, cos theta 0 which is equal to 1, because its value will be 1 at x theta is equal to 0. So fs into 1, that will be fx. So in this case angle is 0, but in this case angle is theta. So I have written formula f W is equal to fx cos theta, and its unit will be joule. In other words, I can say that its unit can be written as Newton into meter, because force is calculated into Newton, but displacement is also calculated in meter. So its unit will be meter, but this cos theta, that is radian. Radian has no unit. Okay, so it will have a finite value, that is dimensionless. So Newton meter, or I can say its value will be, its unit will be joule. So I hope that each and every student who are reading in English medium or who are reading in CBSE board, those students can understand its concept clearly, because movement of any object can be in three directions: along horizontal axis, along any angle, at any angle theta upward direction, yeah, at any angle theta downward direction. So movement can be in three directions. So in two directions, along the horizontal axis and along the angle theta I have considered. Okay, now you have to understand this formula properly, because here I have written work done is defined. Here I have written defined as product of force and displacement, and it is denoted by W. So it is denoted by capital W, and its unit is joule or Newton meter. Okay, some student can write Newton meter or joule. There is no difference. Both meanings are same. Okay, so here I have written two formula. This formula W is equal to F into S. The movement of object is horizontal, and in this case the movement of object is at a theta angle upward direction. So W is equal to fs cos theta. Okay, and its unit I have written here joule or Newton meter. Okay, so you have to know it clearly. Okay, so application of this concept I will use in numerical, so that you can easily understand. Okay, before explaining I will also translate all these information into Hindi, so each and every student can read, who are reading in Hindi medium, or student who are reading in English UP board. Those students can understand its concept in detail. Okay, now all these information I am going to translate into Hindi. Okay, for those students who are reading in Hindi medium or in UP board. Okay, यहाँ पर कहा गया है कि वर्क ENERGY, LG is side, yes, energy, work, energy and power.
सो वर्क मीन्स कार्य, एनर्जी मीन्स ऊर्जा एंड पावर मीन्स शक्ति। तो यहाँ पर तीन कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट जो होता है कार्य है, दूसरा कंसेप्ट ऊर्जा है और तीसरा कंसेप्ट जो होता है शक्ति है। तो हम वन बाय वन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसका कंसेप्ट जो होता है, कंसेप्ट मीन्स इसका जो नियम है, इस नियम या कंसेप्ट को जो होता है हम न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करेंगे, ताकि इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन जो होता है हम न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिखे हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में वस्तु के नाम से जानते हैं या कण या पिंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु लिए हैं, इस वस्तु का मूवमेंट जो होता है हम तीन तरह से कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टली इसको मूवमेंट कर लें, या इसको किसी एंगल पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करें, या किसी एंगल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करें। ओके, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, नाउ अगर हम अगर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो उस केस में जो होता है वर्क जो होता है वो जो होता है दो राशि जो फंडामेंटल जो दो राशि होते हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। पहला जो होता है उसमें जो फोर्स से मूवमेंट कराते हैं वो फोर्स और जितना डिस्टेंस, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं वर्क डन। अगर हम किसी एंगल पर जो होता है उसका मूवमेंट कराते हैं तो उस फोर्स का जो होता है हम घटक को रिजॉल्व करते हैं, उसके दो घटक जो होता है हम दो घटक लिखते हैं, एक जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के डायरेक्शन में घटक लिखेंगे और दूसरा जो होता है वर्टिकल वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम घटक लिखेंगे। और उस घटक लिखने के बाद से हम जानते हैं वर्क जो होता है, हम जानते हैं कि फोर्स और उस वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो दोनों के गुणनफल को ही हम वर्क या वर्क डन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, वस्तु लिया है, उस वस्तु को जो होता है थीटा एंगल को जो होता है हम उसको पुश कर रहे हैं, उसको हम जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु के सेंटर को हमने ए माना है और इसका मूवमेंट कराने के बाद एक उस वस्तु का ही हम सेंटर बी, दूसरे पॉइंट का हम सेंटर हमने बी लिया और ए और बी के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं, उस विस्थापन को हमने यस एज्यूम किया है। अब हम जिस फोर्स से जो होता है उस ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस फोर्स का हम कंपोनेंट घटक जो होता है दो घटक हम लिखेंगे, एक जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्षैतिज रेखा में जो होता है घटक लिखेंगे, एक जो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा में घटक लिखेंगे। तो हमको घटक लिखने के लिए ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किए थे कि जो थीटा एंगल बनाता है उस डायरेक्शन में वो फोर्स इंटू कॉस थीटा होगा, उसके वर्टिकल डायरेक्शन में वो फोर्स इंटू साइन थीटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल जो होता है 90 माइनस थीटा होगा। इस तरीके से हम देखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं एफ कॉस 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 रेशियो होते हैं, एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, टैन, कॉट, सेक और कोसेक होता है। हम क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में जो होता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और थर्ड में जो होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है निगेटिव होता है, लेकिन इसका मूवमेंट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा हो जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होगा। अब हम ये भी एक इंफॉर्मेशन वहाँ पर ऐड करेंगे कि cos 90 प्लस माइनस थीटा हमेशा वो चेंज होता है और जिस क्वाड्रेंट में जाता है उस क्वाड्रेंट का हम साइन को कंसीडर करते हैं, लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने रिजॉल्व किया। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा मिला है और वर्टिकल वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एफ साइन थीटा मिला है। ओके, अब हम वर्क का डेफिनेशन क्या होता है कि वर्क जो होता है दो जो फिजिकल
क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल जो राशि होते हैं, उस दोनों राशियों के जो होता है प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक राशि जो होता है फोर्स होता है, दूसरा बल होता है, दूसरा जो होता है विस्थापन होता है। दोनों के गुणनफल को ही हम वर्क डन करते हैं या वर्क करते हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि work done is defined as product of force and displacement, and it is denoted by capital W, and its unit is joule या न्यूटन into मीटर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम कहेंगे कार्य जो होता है बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम कार्य करते हैं। लेकिन अगर विस्थापन जो होता है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज एक्सिस में होता है तो उस केस में ये थीटा का मान 0 होगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, 1 इंटू एफ दैट विल बी 1 एफ दैट विल बी एफ इंटू एस दैट विल बी एफ एस। हम जो होता है जब एंगल 0 डिग्री हुआ उस केस में वर्क डन या वर्क कार्य जो होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस हो गया। लेकिन हम उस वस्तु का मूवमेंट जो होता है किसी एंगल पर हम थीटा डिग्री पर करा रहे हैं, इसका मीनिंग यह होता है उस वस्तु का जो होता है एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के डायरेक्शन में और वर्टिकल एक्सिस के डायरेक्शन में हमने घटक लिखा है। तो घटक एक घटक जो होता है एफ कॉस थीटा है, दूसरा घटक जो होता है एफ साइन थीटा है। इस तरीके से प्रोडक्ट हम करेंगे एफ कॉस थीटा इंटू एस। हमने एफ कॉस थीटा इंटू एस लिखा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करें ताकि हम इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो एफ एस इंटू कॉस थीटा को हमने लिख दिया। ओके, तो इसलिए स्टूडेंट आप क्लियरली जानिए कि एफ कॉस थीटा हुआ एक फोर्स होता है, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट से या विस्थापन से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किए। तो इसको अरेंज किए सिस्टमेटिक तरीके से ताकि हम इसको याद कर सकें और इसका एप्लीकेशन अपने न्यूमेरिकल में कर सकें। इसलिए एफ इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ यस कॉस थीटा। इसका यूनिट मात्रक जो होता है जूल होता है या समटाइम्स न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, न्यूटन मीटर को ही हम क्या करते हैं जूल करते हैं। ओके, सो ऑल दी इंफॉर्मेशंस हम समझ रहे हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट पर अपडेट और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी पॉइंट इसमें डाउट है उस पॉइंट पर आप क्वेरी टाइप करें और सेंड करें, और हम उस कमेंट को जो होता है पॉजिटिवली ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद से उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस पॉजिटिवली एंड क्लियरली। ओके, नाउ सो द concept of work already I have explained with concept. Now the concept of this work I will also use in the numerical. Okay, so you will know how the work is used in the numerical, how the application of work done is done in numerical. So you concentrate here. One numerical I will write here, and after writing I will give its appropriate solution, so you will understand its meaning clearly. Okay students, so I hope that you are understanding the concept of work. Okay, so in this chapter the work I have already discussed with you. First of all, I will erase this concept, and after erasing this concept I will write one numerical, and in that numerical I will utilize the concept of work, and with the work I will find the work done in that numerical. Okay students, so you concentrate here. I am going to get its solution. Okay, now first of all I am going to erase it, and after erasing I will make the diagram of the question, and then I will write the appropriate question, and then I will give its appropriate solution in English medium. First of all, in English medium, so students who are reading in English medium are in especially about those students can understand clearly its concept and solution, question and its solution. Okay, now after explaining all data in English, and then I will translate into in Hindi medium, so each and every student who are reading in Hindi medium are in UP board, those students can understand its concept in detail. Okay, so work done already I have defined here. One time again I am going to explain, and after explaining I will erase it, and after erasing I will give its proper solution. Okay, first of all I will write numerical, and then I will give the
proper solution of the written question. Okay, so work is very easy. That is the product of two physical quantity. One physical quantity is work, force, and other is displacement. So work done is defined as the product of force and displacement, and it is also called work done, and it is denoted by capital W, and its unit is also known as joule, or sometimes some student can write Newton into meter. There is no in change. Okay, so if angle will be 0 degree, it means that the displacement of that object is horizontally. In that case, I will say W is equal to F into S. But if displacement of that object will be at an angle upward direction, in this case I will write force is equal to F cos theta into X. Now after simplification I will write here Fs cos theta, and its unit will be joule, and I can also write Newton into meter. Okay, so joule scientist gave this formula. So in the place of Newton meter he wrote joule. Okay, in the place of Newton meter he wrote joule. So I followed that instruction, and then I also use same information which is given by joule scientist. Okay, now first of all I will erase this concept, and after erasing this concept I will write one numerical, and in that numerical I will use the concept of work. Okay, so this formula is important, and each and every student has to remember this formula. So here I am going to write, save this formula for remembering purpose. Okay, yes. In this case, the movement of object is horizontal. Okay, if movement of object will be at angle, so I will put there Fs cos theta. Okay, students, so you follow it positively. First of all, I am going to erase it, and after erasing, I will write one numerical. Suppose that there is a object. I have written that object is moving horizontally. So here I will say that is object OBJECT, object 1. Now this object is moving horizontally. So after some time, it will reach at the point B. So this point is A, and this point is B. OBJECT. This point is B. This is object 2. This is object 2. Now it is moving. There is a force. Here I would say there is a force F. There is a force F, and its value is 2 plus X Newton. Now its displacement, I am saying this is point B, and here I have drawn its figure like S. So this distance is S. Here this displacement is S. So further I will write there. Now movement of that object is horizontal. Here I will say it is moving horizontally with force F. It is moving horizontally. So F is equal to 2 plus X Newton. So in this case we have to find work done. Okay, so here I will write numerical. Numerical number 1, calculate the work done. CALCULAT, calculate the work done
Object 1 is moving. Object 1 is moving. Object 1 is moving from point A, from point A from point A to another point B and other point B with displacement yes, from point A whose x coordinate from point A to point B, whose point A has x coordinate, point A has x coordinate 1 and point B has x coordinate 2 as shown in figure. As shown in figure. As shown in figure. As shown below in figure. As shown below in figure. Okay, so here I will say there, here this has x coordinate 1 and x coordinate is 2. I have written. Okay, so we have to find work done when that object is moving from point A to point B, but x coordinate of point A is 1 and x coordinate of point B is 2, and force is applied on the object 1 is 2x plus x Newton, and displacement between A and B, that is written here yes. Okay students, so you have to find positively the value of work done, that is W. So first of all, here I will write solution, but one time so again I am going to say there is one object which is located at point A whose x coordinate is 1, but one force which is applied on that object 1 whose value is 2 plus x Newton. So after some time that object covers a distance yes, and that object has reached at the point B. The coordinate of B point, the coordinate of x at point B is 2. So we have to find the work done from the point A to B. Okay student, so that informations, those informations I have written in the numerical. Okay student, so I hope that each and every student who are reading in CBSE board or in English medium, those students are understanding this question clearly. I will give its solution okay properly. Okay, so you wait here. First of all, I am going to translate all these information into in Hindi, so student who are reading in Hindi medium, those students can understand its concept in detail, how I have drawn its diagram and how I have written its numerical information. Okay, so I am going to explain. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो मतलब एक वस्तु है, वो वस्तु जो होता है पॉइंट ए पर जो होता है लोकेट किया गया है, उसको स्थापित किया गया है, लेकिन पॉइंट ए पर जो वैल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स का मान है, एक्स
कोऑर्डिनेट है या एक्स का मान है वो 1 है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर जो होता है 2x प्लस एक्स एक बल लगाया जा रहा है, उतने न्यूटन का एक बल लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो होता है बिंदु ए से मूव करके बिंदु बी पर पहुंच जाता है। और ए से और बी के बीच की दूरी को हमने यस को कंसीडर किया है। ओके, यस कंसीडर किया है। अब कहा गया है कि बिंदु ए से बी के बीच की में कितना वर्क डन लग रहा है, उस वर्क डन को आप फाइंड आउट कीजिए। ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन दिया गया, ये सारा इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखा है कि बिंदु ए से बी के बीच में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को फाइंड आउट कीजिए। लेकिन जिस पॉइंट ए पर जो वस्तु रखा गया उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 दिया गया है। जब वस्तु बिंदु ए पर जब वस्तु एक रखा गया है तो कुछ समय बाद जो होता है यह दूरी जब कवर करता है तो बिंदु बी पर पहुंचता है। तो बी बिंदु पर जो होता है एक्स का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, और वो फोर्स जो होता है जो बल लगाया गया है ऑब्जेक्ट 1 पर, वो बल का मान जो होता है 2 प्लस एक्स के फॉर्म में दिया गया है। तो कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें कि ए और बी के बीच में कितना वर्क लगा, कितना कार्य किया गया, उस कार्य को कैलकुलेट करें। ओके स्टूडेंट, सो ऑल दोज इंफॉर्मेशंस आई हैव रिटेन इन द numerical, okay, properly. Okay, if you are understanding clearly, so okay, if you have any doubt, so you also type या write informations regarding this on the comment section, and positively you send, and then I will read. After reading I will give the proper solution of your question in detail. Okay student, if you are understanding all the informations clearly, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic. Okay, this is the important question, and you concentrate here how we have to calculate work done between A and B. Okay student, so positively above information I will erase, and after erasing I will give its proper solution. Okay, because there is no space, so every data I will erase. Okay, all informations are available in the diagram. From diagram I will take to calculate the work done between A and B, between the point A and B. So you concentrate here. I am going to write here. First of all, in step 1 I have to write here solution here. So LUTION in solution, first of all I will write here given that, GIVEN, given that. So all information I will write here. Now given that, it means that I will say F force is given here 2 plus X, and its unit is Newton. So here I have written. Now its displacement, this LACEMENT, displacement is yes is given, its unit will be meter. Okay, now x coordinate, x1 is equal to, x coordinate is lower limit, that is 1 to x is equal to 2. I have to calculate its value. Okay, now work done according to the question I have to write here ACCORDING, according to question, QUESTION, according to question I have to write work done, W is equal to F into S. F into S, here I have to write F into S. This is the general formula, but it is given in variable form, so I will integrate it properly. So I will say the change in work done, which is equal to force into change in displacement. Here I will write work done is equal to F into S. Now here variable is available in the form of X and also in the form of X. So I will write here change in work done, that will WD, which is equal to F into dx. Now I will integrate on both sides. And on the both side means I will write here integration of this will be from x is equal to 1 to
2. It means that here I will write x which is equal to 1 and x which is equal to 2. Properly I have to write here. Okay. After writing, I will say, so in the left hand side I will write one information. After writing that information, first of all I will write the statement and then I will write this information, so that will be easy to understand each and every students in detail. Okay, so here I can write change in work and change in displacement. So here I will write, this is the equation number 1. So I will write one statement and that statement will be important and each and every student has to remember that statement. Okay, on integrating both sides we get, on integrating both sides of equation 1 we get, and then we will write we get. Okay students, so here information I have written. So work done, I know work done is simple, that is W is equal to F into S if movement of object will be horizontally. In that case I can say that theta will be 0 degrees. So work done will be W is equal to Fs. So this is the movement of any object in a fixed direction with a fixed distance, so that will be F, and W is equal to F into S. But here variables are available there, so I will say change in work done, I can write D into W. Change in work done, here F is constant, so I can write there into, I will put there change in displacement. So displacement can be maximum, minimum, or anything according to the situation. Okay, therefore equation number 1 I am integrating both sides, and after integrating I will get value. Okay, I will write the information. So all these informations I will also explain in Hindi, so students who are reading in Hindi medium or students who are reading in UP board, those students can understand its concept in detail. Okay, ऑलरेडी हमने बताया कि एक वस्तु पॉइंट ए पर रखा गया है और उस पॉइंट ए पर जो x का कोऑर्डिनेट का मान है वो 1 है, लेकिन इस पर जो होता है एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये वेरिएबल फोर्स है, F इज इक्वल टू जो होता है 2x प्लस 2 प्लस x न्यूटन दिया गया। ये जो होता है वेरिएबल फोर्स है उसको अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने के बाद से किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये बी पॉइंट पर पहुंचता है। इस बी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो ए से और बी के बीच की दूरी को हमने x उस x को हमने टेक किया, कंसीडर किया। अब इसका इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी क्वेश्चन में नोट किए थे। अब इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम कहेंगे कि गिवन दैट मीन्स दिया है, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया उसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद से इसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो फोर्स का वैल्यू दिया गया 2 प्लस x न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट s दिया गया है, और बिंदु ए पर जो होता है x का वैल्यू 1 है, बिंदु बी पर x का वैल्यू 2 है, ऑलरेडी दिया गया। हम क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमने लिखा है कि वर्क डन जो होता है, कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो हम इसमें जो होता है वेरिएबल जो होता है वो डिस्टेंस जो होता है x के फॉर्म में वो वेरिएबल है, चेंज होगा, इसलिए दोनों तरफ जो होता है हम वर्क डन, अगर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा इसका मतलब वर्क चेंज होगा। तो चेंज इन वर्क यहाँ पर लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को लिखे। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 को एज्यूम किया है और इसके दोनों साइड में जो होता है हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट को हिंदी में जो होता है समाकलन के नाम से जानते हैं, जो ऑलरेडी क्लास
ट्वेल्थ में जो होता है समाकलन एक चैप्टर है, कैलकुलस एक बुक है जिसमें एक समाकलन चैप्टर है, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो उस कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। दोनों साइड में जो होता है हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद से उसका लोअर लिमिट जो होता है x बराबर 1 लेंगे और x बराबर 2 लेंगे, जो हमारा विस्थापन के केस में दिया गया। ओके स्टूडेंट, सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर रीडिंग इन हिंदी मीडियम those are understanding clearly. Okay, now after it I will give its further solution. So above information को हम इरेज करेंगे और below information को हम पॉजिटिवली हम राइट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जब इक्वेशन 1 को जो होता है हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इसको इंटीग्रेशन का सिंबल को हिंदी में संकेत के नाम से जानते हैं। इसको डी डब्ल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन करेंगे एफ इंटू डी एस लिखेंगे, एफ इंटू डी एस। अब इसका इंटीग्रेशन जो होता है x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मीनिंग होता है समाकलन करेंगे। उसके बाद से हम इस जो पैराग्राफ दिया गया था या ये जो होता है स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट को पॉजिटिवली जो होता है इक्वेशन नंबर 1 में जो अप्लाई किया है तो इस कंडीशन को हमने ऑब्टेन किया है। इसलिए बेलो डाटा को हम इरेज करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करते हैं तो अगर 1 का जो इंटीग्रेट करते हैं हम 1 इंटू डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। जब 1 का इंटीग्रेशन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। और उसके बाद से राइट हैंड साइड में हम एफ का किसी भी वेरिएबल का जब इंटीग्रेट करते हैं तो उस वेरिएबल को इंटीग्रेट करने के बाद से हम इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे और फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 प्लस एक्स इंटू इस डिस्टेंस को भी हम अगर हम x के रिस्पेक्ट में हम इस डिस्टेंस को अगर x लेंगे तो यहाँ पर भी हमको एस लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर dx हो जाएगा। ओके, इस दूरी को जो होता है हम x कंसीडर करेंगे। उसके बाद से इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का कंसेप्ट जो होता है हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे 2 इंटू dx होगा। इस dx को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस dx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 इंटू dx ऐसे लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन जो होता है यहाँ पर 1 से 2 होगा। उसके बाद से हम इस dx का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इंटू dx करेंगे और इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको समाकलन करते हैं x इज इक्वल टू 1 से 2 तक। ओके स्टूडेंट, तो अब इस कंसेप्ट को हम प्रॉपरली यूज करेंगे। प्रॉपरली यूज करने के बाद से इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, अगर ये किसी वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पर 2 इंटू एक्स हो जाता है। और किसी वेरिएबल का इंटीग्रेट करते हैं x टू दी पावर n इंटू एक्स को, तो इसका इंटीग्रेट करते हैं तो x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाता है। और इंटीग्रेट करने के बाद से यहाँ पे एक अचर कांस्टेंट c कंसीडर करते हैं। n प्लस 1 हो गया, एक अचर कांस्टेंट c कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म का हम इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज द फार्मूला एंड यू हैव टू फॉलो इट पॉजिटिवली। ओके, यह एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको पॉजिटिवली फॉलो करना है। अगर हम किसी भी कांस्टेंट का मतलब अचर वेरिएबल का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो उसके साथ एक x आ जाता है और एक अचर कांस्टेंट एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट c ऐड होता है। इसी तरीके से अगर कोई भी वेरिएबल x है उस पर पावर n है तो इसका इंटीग्रेट करते हैं, इसके पावर में एक जुड़ जाता है और उसका पावर से डिवाइड करते हैं और ये एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें जो अचर कांस्टेंट c ऐड होता है। उस कंसेप्ट को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स हो गया और इस पर जो होता है इसको हम लोअर लिमिट कहेंगे और इसको हम अपर लिमिट कहेंगे। और इसके साथ जो होता है एक अचर कांस्टेंट सी भी ऐड होगा जो ऑलरेडी वहाँ पर फार्मूला हमने लिखा है। तो यहाँ पर इसका लोअर लिमिट 1 हो गया, अपर लिमिट 2 हो गया। यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे। उसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर पावर 1 है तो n 1 प्लस 1
1 + 1 हो जाएगा, अब बटे 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड प्लस एक अचर कांस्टेंट सी हो जाएगा। इसका भी हम इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं 1 से लेकर 2 तक। ओके स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को जो होता है हम वर्क डन कहेंगे, उस वर्क डन से उस उतना वर्क डन करेंगे, तब यह ऑब्जेक्ट जो वस्तु 1 है, जो बिंदु ए से जो होता है बिंदु बी पर, हम उस वर्क डन से हम पहुंच जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो पॉजिटिवली इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में W लिखेंगे और राइट हैंड साइड में ये इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर जो होता है हम अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद से माइनस करेंगे, लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से हमको एक रिजल्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, सो यू कंसंट्रेट हियर, आई एम गोइंग टू give it further solution. So here in the left hand side I have to write here W. here अगर अपर लिमिट लिखेंगे, जहाँ पर x है उस x की जगह पर 2 लिखेंगे, तो 2 पहले से इंटू x की जगह पर 2 प्लस c, अब माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट का मीनिंग यह हो गया, लोअर लिमिट का 2 इंटू 1 अब माइनस c, तो ये वैल्यू हमने लिखा। उसी तरीके से प्लस है, अब इसमें एक्स स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस सी हो गया, और माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस सी हो गया। अब बटे 2 इसमें भी है, अब बटे 2 इसमें भी है। ओके, सो पॉजिटिवली आई कैन राइट हियर। सो बटे 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से रखेंगे, 2 स्क्वायर बटे 2 प्लस सी माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी, इस तरीके से हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्लस सी और माइनस सी जो था कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस सी और माइनस सी कैंसिल आउट होगा। इसको सिंप्लीफाई कर 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2 प्लस हियर हम लिखेंगे इसका वैल्यू हम लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये रहेगा 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, फर्दर आई विल सिंप्लीफाई इट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस हियर विल 2 1 जा 2 2 2 जा 4, हियर 2 और 0.5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 माइनस 0.5। ये वर्क डन, ये W होगा, मेरा वर्क डन हो गया। इस तरीके से हम W इज इक्वल टू लिखेंगे, W इज इक्वल टू 4 माइनस इतना। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप प्रॉपरली देखें, 4.0 लिखेंगे और 0.5 है, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 जा 5, हियर विल बी 3। सो आफ्टर सिंप्लीफाई आई कैन राइट हियर 3.5 जूल or Newton meter. This is my final answer of the given numerical. Okay students, so according to this way I can evaluate its value. Okay, so positively I am going to say you, if any force which is moving horizontally, so product of force into displacement is called work done. So work done is very simple, that is the product of two physical quantity, one is the force and other is the displacement. Okay, now in the given question, force is given like this and displacement is also there is x, and I have used the same formula, W is equal to F into S, because this is displacement is variable, so I will take the change in work and also change in displacement, and then I have to integrate that work from 1 to 2. After integrating I will substitute the value, and after substituting the value I will get the value, and that value will be the work done of the question. Okay, so this is the required concept. According to this way, any question which is related to work done we can easily solve. Okay, so you concentrate here, one movement of one object will be horizontal, other movement of other object can be any angle
at any angle upward direction, and movement of any object can be downward at any angle. So you have to follow same formula, that is W is equal to F uh, F into S. That is the formula along the x-axis. That is the horizontal axis. But along the any theta angle, that will be Fs cos theta. And I have already considered and already I have explained with you. If you have any doubt, so you write your doubt point in the comment section. Positively, I will look your comment and then I will give the appropriate solution of your question in detail. If you are understanding all points, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic positively. Okay students, so thank you for watching this live video. Always I will meet with you on the same time, that is 30 minutes past to 7 o'clock to 30 minutes past to 8 o'clock. During this time interval, I will explain the concept of class 11 physics. Okay, and class 10th, 11th and 12th mathematics, I have already prepared and uploaded in my YouTube channel, that is RANA SIR UP KUSHINAGAR. You go in my playlist section and you go to read each chapters positively, because numericals and concept already I have defined in both languages, that is in Hindi language and also in English language. Okay, according to your requirement, you prefer and then you read and you study properly. And plus 11, 10th, 11th and 12th physics, I have already prepared its concept and numericals, and already I have uploaded. You can also read class 10th, 11th and 12th physics. That is already available in my YouTube channel, and you check playlist and in there according to chapter wise, already I have uploaded there. Okay students, so thank you for watching this live video, and always I will follow the same time slot. During this time slot I can teach properly class 11 physics and also class 10th mathematics. Okay, so one by one I will teach you. Okay, thank you for watching this live video. Jai Hind.